Hello and welcome everyone. So today we are going to learn how to read an ECG strip. As you know, electrocardiogram is a investigation of choice in many clinical scenarios, being the emergency setting or normal OPD setting. Not just because of any cardiac complaint, but many other systemic complaints are very easily diagnosed with ECG strips, and it is a very cheap diagnostic tool and very usually practiced in many settings. And the result, like the investigation result, is got in very few seconds. So let's begin. How to read an ECG strip. So basically, in practice, we see we get 12 lead ECG. So इसमें जो 12 लीड रहती है, हर लीड का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है. कैसे हर लीड अपना एक सिग्निफिकेंट रोल दिखाती है, कैसे उनकी प्लेसमेंट होती है, क्या विच पार्ट ऑफ द डिपोलराइजेशन और द रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट, कौन सा चैम्बर कौन सा लीड अफेक्ट करती है, क्यों लीड टू एक पूरा ओवर एंड जनरलाइज्ड हार्ट का रोल बता सकती है. What does the V1 V4 and V2 V6 suggest? And sometimes we also see like some leads are put at the back V7, तो अभी जनरली प्लेस नहीं होती है, पर लेकिन which conditions call for it, and what are the few emergency signs needing an ECG. Everything will be done systematically in the upcoming lectures. So let's begin. As you can see on the screen on my left side, so we have a first lead. We have a 12 lead ECG. इसमें हमारा जो पोर्शन है वो दो साइड में डिवाइडेड है. Okay. Okay. So दो पोर्शन में डिवाइडेड रहता है इसमें. So on this side we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 strips. So these are the limb leads. As the name suggests, ये हमारे हाथों और पैरों पे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पे अपनी अपनी पोजीशन पे इनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहाँ पे लगाई जाती हैं. एंड V1 to V6 are the precordial leads. प्रीकॉर्डियल यानी कि ये चेस्ट के अराउंड लगाई जाएंगी. हर लीड का अपना सिग्निफिकेंस होता है. जैसे V5 V6 हमारा बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का हाल बताते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पोर्शन रीड करते हैं. सेकंड जो है वो इन जनरल पूरा बॉडी का हार्ट बता देगा. हमारा AVL लेफ्ट साइड में, AVR राइट साइड में, मतलब कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल का मतलब कि उसका वो बताएगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट. सो देन as you can also read कि ECG like any tool is a tool. अब ये tool आपके हाथ में, जैसे कि surgeon's blade, it's up to you how to utilize it. So okay, so then in the upcoming lectures we'll be dealing with these things, but you can take a screenshot or read on your own. So okay. Then practicing, we'll also see the practicing of various steps. And the 9-step method for reading EKG. So first we'll read how to standardize in heart rate, intervals, access, rhythm. These are the 4 questions, and then later we'll see if there is any major conduction block which could be suggesting for a intervention. Then pre-excitation syndromes, enlargement and hypertrophy, very good finding. Then later, if we get any of these, then the second investigation is echocardiography 2D. So if there is enlargement, coronary artery disease, other changes like the other systemic changes through ECG. Okay, let's dive into the other deep concept. Okay, so what makes an ECG? So as the name says, it electrocardiogram. So many things are related to the heart, and heart is the main vital organ. पूरी बॉडी की सर्कुलेशन से लेके बहुत सारी चीजें हैंडल करता है बॉडी की हार्ट. So
anything wrong with heart could be potentially lethal. So let's dive into the basic physiology. As you all must remember, पहले से सब पुख्ता होगा लेकिन फिर एक हम रिकैप्चुलेट करते हैं इस चीज को. सो इनेट बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो हार्ट की सेल्स को अगर हम ऐसे दिखाएं, then the negatively charged inside, the positively charged outside. तो रेस्टिंग स्टेट में जो कार्डियक सेल्स होती है उनका जो पोलैरिटी होता है, मतलब वो इनर में नेगेटिव रहते हैं एंड देन आउटसाइड में पॉजिटिव रहता है. मतलब कि इनेट अगर कार्डियक सेल्स का पोलैरिटी देखें तो पर एक कुछ कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो कुछ डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती हैं. देन कम्स द कांसेप्ट ऑफ डीपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन, दिस इनेट इनसाइड बीइंग नेगेटिव इज देन किसी भी स्टिमुलस के आने के बाद इसमें जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है और फिर एक वेव, रिपोलराइजेशन की वेव आती है जो क्या कहते हैं रिवर्स कर देती है फ्लो ऑफ आयंस को. ठीक है. एवरी ईकेजी वेव इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली दीज टू प्रोसेस, depolarization and repolarization. Then this is the typical diagram to see diagrammatic way how the cardiac cells are charged negatively on the inside and then a stimulus drives the positive charge into the cells, which as a wave transmit to the other cells and then causes depolarization of the cardiac muscles. Then the three pillars of the heart. The first one is the pacemaker cells, the electrical conductive cells, the what can be found with the backbone bundle, namely, and then the myocardial cells. The myocardial cells is the main field the electron. Like imagine heart being a field, then it is the player. For a football match to happen, the player, a football, and a field is required. So the main player, the one who is kicking all the stuff, is the pacemaker cells, which is a driving force of the ground. And then we have the electrical conducting cells, which is the ball, which is the thing transmitting throughout the field. And the force is acted upon the ground, like in study. If you can recall, studying for physics, while walking we push the ground, so the main act is done on the ground. So say similarly the myocardial cells, all the forces are acted upon the myocardial cells. So this is the pacemaker cells. Then we have the conduction pathway and then the myocardial cells. Okay, the pacemaker cells are the power source. So these are the incredibly small, like a spider web, like very tiny, like a strand of a spider web. मकड़ी के जाल का एक रेशे के बराबर हमारा एक पेसमेकर सेल होता है जिसका roughly लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर रहता है. एंड इनका कोई अपना रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं रहता, मतलब हार्ट नेवर रेस्ट. सो इनको एक स्मॉल इनफ्लक्स में ही अपना वापस से स्लो डिपोलराइजेशन करना होता है. सो पर लेकिन हमारी ये आ जाती है बात मेन एस ए नोड का जो फायरिंग फैक्टर रहता है वो 60 to 100 का रहता है, यानी कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट पर सेकेंड इनको ये करना होगा. पर मिनट कर रहे हो, 60 to 100 पर मिनट करते हैं. फिर उसके बाद मेन फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि 60 to 100 कर रहे हैं पर लेकिन अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा लेस देन 60 एंड टेकिकार्डिया हो जाएगा मोर देन 100. पर लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए नोट्स तो हैं, पर लेकिन किन्हीं किन्हीं जैसे फाइब्रिलेशन और फ्लटर के केसेस में जो ये बीट है ये 200 250 चली जाती है. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज वहां पे ड्राइव कौन कर रहा है, इज इट द एसए नोड और द एवी नोड or something else. So it could be something else. And that concept is called ectopic rhythm. Ectopic rhythm is the concept कि कार्डियक सेल की एक स्पेशल बात होती है कि हर कार्डियक सेल के पास एक अपना इनिट पोटेंशियल रहता है कि वो हर कोई बीट जनरेट कर सकता है. पर लेकिन वही हो गया ना कि अगर जिसका जो काम है वो ना करके दूसरा कोई उसका काम कर रहा है तो it can't be more efficient because there is something more special about the SA node. They are more regulated. अगर पॉइंट है ए एंड बी को टच करके वापस आना है पर लेकिन एक साथ साथ में आपको बाल्टी भी भरनी है
पर लेकिन अगर आप जल्दी सिर्फ स्पीड को एक अपना गोल बना लोगे, so you can't fill the bucket properly if you are running between A and B. So that's what happened in atrial flutter and atrial fibrillation. So if you have to run across A and B, if you have to be very regularly paced, unless you won't be able to circulate through the head and toe. So this is the diagrammatic representation, and so this one is much important. You can see a generic cardiac cell having a typical action potential of minus 90 millivolt, and then we have a pacemaker cells, no true negative potential, and particularly this A to B. As soon as it reaches the minus 60 volt, the base point, as soon as it touches the base, तुरंत उसको सिग्नल आ जाता है डीपोलराइजेशन का, स्लो, थोड़ा वैसे रहता है जिससे यहाँ पे एब्रप्ट, this is abrupt, this is slow, but this touches the baseline for few seconds, then again for few seconds, but here it is very spiky, very sharp, and then again to a the slow depolarization, then B to C, just the heart to beat, so action potential phase, and then we have again repolarization. So you can note a few things from this. The main thing is no automaticity for the generic cardiac cells. So physical contraction, pumping. So nature has given everyone a special role. So जहाँ पे इसका काम बस pumping का है, तो इसको इतनी specialization नहीं मिली है कि इसको एक judgment लेनी है. But the pacemaker cells have to take a judgment, so it can't rest for more time. So electrical timing, pacing is required for it, and for this the only role is pumping. So uh, nature has not given it automaticity, but given it a time to rest. Electrical conducting cells, the wiring. So this atria में इसी चीज को हमारे conducting pathway को backbone bundle कहते हैं, and it get the name as Purkinje fiber when it is a ventricle. Then thirdly, we have myocardial cells, and these cells make up the vast bulk of the heart tissue, perform very heavy labor, pumping blood. When a wave of depolarization hit the myocardial cell, it triggers certain career of calcium cell, and stem cells का influx जैसे होता है, और sudden contraction होती है, और contraction एक excitation contraction coupling होती है, it triggers the actin and myosin, causes them to interact, and then electrical current is transmitted, but more slowly. So this is all for today. In this segment, we learn how the basics, very basics of ECD, what basic physiology is affecting the ECD lead, and in the next lecture we will see what component gives what part of the ECD lead. Thank you.